ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे कोई जानना ये जोश तेरा कोई जानना जुनून तेरा घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Torque Live broadcast. This is Holistic Living, and with me will be joining a wonderful group of experts. आप सबका बहुत welcome. आप हमें जहाँ से join कर रहे हैं, please write that in the comments. Where are you joining us from? What do you do? This is gonna go on till 11:15. Very very interactive. और मेरे साथ हैं मेरे बहुत अजीज दोस्त उस्ताद और हमने बड़ा मज़ेदार एक पैनल आपके लिए तश्कील दिया है. तो I hope that you're gonna have a great time with us. We'd also request if you can please share it ahead. Saima, welcome on the show. Azim, Nasra Iqbal, and Alisha, please share it ahead so that more people can join in. We're going to be talking about holistic living. Professionals की जिंदगी में हमेशा ये सवाल रहता है कि बैलेंस कैसे लेकर आए. कोविड ने हमें हिलाया और कोविड के बाद अब डिजिटल हमें मुसलसल आने वाली चीज़ें हिलाती रहती हैं और हम बार बार ये सवाल पूछते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में कैसे ला सकें, एक तरफ भागते ना चले जाएं. And we all have those tendencies. How do we deal with that? We have some mind experts with us. We have a wonderful entrepreneur, and then we have a friend. So let me introduce them in my own way. First and foremost, a very, very special man on the show, very accomplished entrepreneur, Mr. Irfan Mustafa. Irfan Saab, welcome. Shukriya. Thank you for inviting इरफान साहब वेटरन एंटरप्रेन्योर्स में शुमार किए जाते हैं पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट स्फेयर में, अब दुबई बेस्ड हैं, फूड बिजनेस के हवाले से बेशुमार. इफ यू हैव हर्ड ऑफ यम ब्रांड्स, इफ यू हैव ईटन बास्किन रॉबिन्स इन पाकिस्तान, lots that he has done, and I've invited him on the show today. कि एक एंटरप्रेन्योर जिसने बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ कमा लिया, वो इस टॉपिक को कैसे देखते हैं ताकि हम उनके व्यू से देख सकें. And he has also been instrumental in my journey recently and has helped me understand a whole lot. Thank you very much, Irfan sir, for being you. The second on the show, somebody I started my career with in the industry about 18 years now, Urooj Mazhar. Welcome on the show, Urooj. Thank you so much, Umair. Absolutely honored to be here. Joining us all the way from Canada, Urooj is now a wonderful counselor, a wonderful facilitator. She's always been, but deep चली गई दिमाग में, जज्बात में, और अब बेशुमार लोगों को help करती हैं in organizations, individually. Thank you very much, Urooj. Looking forward to what you have to offer today, inshallah. Next, and very, very cool man, Max Babri. Look at him. His message that we're all wonderful and we've got to make it worth it. Thank you very much, Max, for joining us. It's a pleasure to be with you. Thank you. Max is an accomplished psychotherapist, somebody who deals with the mind with tools that work, and he has transformed many, many lives, and he stays the man that he is. Lots to learn from him. Thank you very much. And last but not the least, somebody I have school memories with, a man of many talents since his childhood, Maddi Murtaza is with us. Again, somebody who has been very popular as a trainer, facilitator, and has also moved to Canada and is working from there and also doing things in Pakistan, but is trying to balance a whole lot. So welcome on the show, Maddi. Pleasure to be here. Thanks for having me. Wonderful. So we have all of you, and I am going to be moderating. So my job is to make sure that the people we have, and many eyes there, thank you very much. जो देख रहे हैं, please बताएं आप कौन हैं, कहाँ से join कर रहे हैं, क्या करते हैं, ताकि हम पैनल को दिखा सकें वो, ताकि उनके comments, उनकी बातें आपके लिए relevant हो सकें. दूसरा, इसको please आगे share करें so that more people can join the dialogue. रमजान जैसे हमें
इस फ्रेम में ले आता है और इसका खास मकसद आज की तारीख में करना या रमज़ान ख़त्म होने से पहले करने का मकसद है कि हम कैसे होलिस्टिक रह सकें बियॉन्ड रमज़ान एज वेल. Let's get going. I would like all the panelists to initially just give your perspective on the topic, which is holistic living. Brief one that you will then detail with us in the later round. So round one, whoever wants to go first. Okay, Irfan Saab, there you are. Thanks once again for inviting me, and of course, Max and I go back many, many years. So good to have him there. And so, acha, I'll just kick off by quoting Quran, by quoting Ghalib, and by quoting myself. I started composing 3 years ago, just out of the blue, right? So I hopefully that will set the stage for what we're going to discuss. So, सबसे पहले Quran. I will not change the circumstances of an individual or a nation until it is ready to do so itself. So पहला तो ये, right? And we need to think about this. Number one, मैं किसी कौम के या इंसान के हालात उस वक्त तक नहीं बदलूंगा जब अपने हालात बदलने के लिए खुद तैयार ना हो जाए. नंबर वन. नंबर टू, गालिब. उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. राइट. सो दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव वी गोइंग टू टॉक अबाउट. और तीसरा मेरा है, अगर अंदर का मौसम खुशगवार है, अगर अंदर का मौसम खुशगवार है तो बाहर हर समय बहार है. Wow. 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 This is what it is. So, it's all about self-awareness. It's all about going within, right? And finding the good and the bad and the ugly. And so that's what I think to me is what holistic living is all about, or well-being. So I've given a different name. मैं उसको concept of वहदियत कहता हूँ, or oneness, right? So we can talk about that later. So that's all I had to say. Wow, I'm looking forward to what you will say in your dedicated 5 Irfan Saab. Anytime. क्या ये कमाल रात की महफिलों का होता है कि लोग ज्यादा शायराना हो जाते हैं? हाँ, इसीलिए मैं different perspective ला दोपहर वाला. ये मेरी ये वजह नहीं है. It's because I've been married for 45 years. There's another interesting realization that on this screen we have two schoolmates. So Irfan Saab and Max, you spent time together in school? That's correct. And St. Anthony's. Wow. Yeah. Well, is that an indication that I should go now, or I will talk about? Take the stage, Max. Yes. बात ये है कि मैंने और इरफान ने यकीनन बहुत ज़्यादा वक्त साथ गुजारा, लेकिन इरफान remains the guru, and Irfan remains a role model, and Irfan remains somebody who has always mentored me and shown me the path, and sometimes also kind of told me what things I could do differently, and I'm very grateful for that, him being there and him being supporting and guiding me to the more appropriate directions. So I would just kick off by saying a small thing that there is this a point B, and the point B is when we are born, and birth takes place, and we have no control over where we would be born, which family, which country, which color skin, which family, what education, abundance, not abundance, whatever. So we are born and we don't choose that. And then there is the end of the line is 10 years, 20 years, 30 years, 100 years, 120 years, whatever. As we grow older, we think there are more, but anyways. So there is a point D, and that D is a transition to the next world. So point B is we come into this world, and point D is the transition, and we go away from this world and get into another world. So in between B and D, and of course we don't know how we will die, where we will die, what would be the conditions for most of us. I mean, I can always put a gun on my temple and say, oh, I'm going, but in majority of the cases, in 99.9% of the cases, we don't know how, where, when we will die. So between B and D, there is a letter called C. And C could be either compulsions or it could be choices. So if we exercise our choices, we would have a very fulfilling life.
And if we have the compulsion, it may end up doing exactly the same things. But if we believe कि मजबूरी कर रहा हूँ, मजबूरी कर रहा हूँ, मजबूरी कर रहा हूँ, और मैं समझ रहा हूँ खुशी से कर रहा हूँ, खुशी से कर रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ. So that is something very dear to me, and that's a very transformative thing for myself. And I have learned this tremendously, and I would always urge people, and when I do counseling as well, to be able to exercise. Let's exercise our choices rather than our compulsions. Wonderful. So between no choices, there could be compulsions or choices. Looking forward to hear more, Max. Thank you for that. Urooj, you're up next. Yes. So I'm trying to hear the different views and it's beautiful. मैं एक therapist हूँ और वो वाला नजरिया भी लेके आना चाहती हूँ. Holistic, like the name holistic suggests whole. So हमारे अंदर बहुत सारे parts हैं and we unfortunately the way the world is हम उस parts को fully balance करके नहीं रहते. So the soul, mind, body, emotions, just like the poster said, these are different parts, but I feel हो सकता है कि दुनिया में body पे ज़्यादा focus हो. तो जब वो parts uneven होते हैं तो जो मीज़ान की बात है, balance की बात है, हर जगह हम balance आते हैं, the balance is skewed. And I think the simplest way I look at it is if you're mindful of the gaps, if you're mindful of अभी आपका balance किस तरफ जा रहा है, किस तरफ हो रहा है, so then you can intentionally fulfill that. So being intentional, and also I really want to call out being kind. No, don't let this again इस talk को ये ना हो जाए कि ऐसे करना है all the shoulds पे shit हो जानी चाहिए ना. तो सारे shoulds को हमें नहीं करना चाहिए. It's a very kind journey of looking inward and see मेरे कितने कितने parts हैं. I'm maybe not looking at the whole picture. How can I bring colors to all the sides of me and have that balanced holistic living? वाह, मेरे कितने कितने पार्ट्स हैं. एंड पोस्ट में भी जैसे हमने बताया, सोल, माइंड, इमोशन, बॉडी, दीज आर आवर डायमेंशन. स्पिरिचुअल डायमेंशन है हमारी, जो कि हम टैप करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में. हमारी मेंटल डायमेंशन है, जो कि स्क्रूड भी हो सकती है, कंपल्सिव भी हो सकती है, बायस भी हो सकती है, जो भी हम सोचते हैं, जैसे भी दुनिया को देखते हैं. फिर हमारी इमोशनल डायमेंशन है, जिसको आप महारत रखती हैं. और फिर हमारी फिजिकल डायमेंशन है, जो कि हमारा जिस्म है और हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं. Maddi, you have been using these dimensions and you put them out sometimes as a musician, sometimes as a trainer. I fail to understand where you're gonna end, but I love how you use these dimensions. So what is holistic living for you? Hi, Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for having me. What a great question. Like you just mentioned, तो मैं अपने ही पास से थोड़ा सा शुरू करूँगा कि मेरी जो ज़िंदगी रही है वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल रही है. मेरी choices when it comes to career, profession, expertise, वो जो है वो बहुत ही जिसकी बुनियाद जो रही है वो कभी भी पैसा कमाना नहीं रही. Let's preface it at that. तो जब वो पैसे की इक्वेशन माइनस कर दी और स्किल बेस्ड और सीखने वाली इक्वेशन को ऐड कर दिया कि I just wanted to learn. I was so passionate about learning and so many things. And then when you get to a level when you kind of, I wouldn't say mastered it, but I would say good enough when you say, okay, now I know this. I can do this in my sleep. Now I'm so good at it that I've achieved it at a level from the masters and from experience and from practices कि अब मैं जो है वो काफ़ी हो गया. तो वहाँ जब भी मैं पहुँचता हूँ किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में, मैं स्विच कर देता हूँ. I've been a trainer, I've been a public speaker. उससे पहले I was a full-time entrepreneur. I was publishing ebooks and online courses in 2008 to 2012. 2012 onwards, yeah, right. 2012 onwards, I was doing trainings and workshops and public speaking with you guys. 2015 onwards, I was a full-time creative advertising executive. I was writing concepts for television, print, radio, and digital for brands that we all see, love, use here. Nationwide big brands. तो उससे जो पर्सपेक्टिव और नजरिया बनता गया, हर इंडस्ट्री को बड़ा क्लोजली देखना और उसको पहले बाहर से करना, फिर उसके अंदर जाके काम करना, फिर उस दोबारा बाहर निकलना, फिर अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे काम करना, वो इतना इनरिचिंग रहा है. तो वहाँ से फिर मैं होलिस्टिक लिविंग पे आता हूँ कि जब मैं अपनी लाइफ को रेट्रोस्पेक्टिव में देखता हूँ तो फिर मुझे यही समझ में आता है कि अगर मुझे चंद कुलियात, ये जो बातें हम आज कर रहे हैं, having multiple perspectives, being aware of your dimensions कि मेरे अंदर है क्या क्या, ये वाली जो बातें अगर मुझे सही टाइम पे मिल जाती तो I would have been a wholesome, even a more enriched experience on a different level. So I'm very glad that we're having this conversation, and I look forward to adding more from my experiences and my perspectives in this talk. Since you're my friend Maddi a long time,
Max was taking a lot of notes, and I think he has an analysis for you. And मुझे तो बड़ा डर लगता है उरूज और मैक्स के सामने बात करते हुए. आई एम ओके टॉकिंग टू इरफान साहब, आई कैन बी माई सेल्फ विद यू, बट देयर इज समथिंग. जी जी, उस्ताद लोग जब बैठे हो महफिल में तो बात करने से पहले ना, तो ये अच्छी बात है कि आई एम कंप्लीटली लाइक अनअवेयर एंड आई कैन बी वेरी ओपन. आई नो अरूज ऑफ कोर्स एंड शी डीप एनालिसिस चल रहा होगा बहुत जबरदस्त किस्म का, बट मजा आने Max, वाला we है. should tell them that we don't do this without money, right? I think Umair is like that, and Umair is quite a remarkable human being, and so are we all. The thing is, we are exceptionally gifted. We are exceptionally remarkable. The day we were created, we were fantastic. One of the finest expression of the nature and the creator, and also, if you look at it from a Darwinian point of view, we were the final product of millions of years of product development and survival of the fittest. So, whichever way we want to look at it, it sums up to be the most exceptional life form. Now, certainly, we start learning from day one, and we start listening to things that people are saying. And some of these things that we learn and some of these things that we hear from people around us, sometimes they are appreciation and admiration, but sometimes this is also other people's frustration which get offloaded onto us. And Urooj, being a counselor and a therapist, understands this, that some of these things then we begin to internalize and we begin to think of ourselves that we are what others tell us, what we are, what people said to us when they were frustrated. We don't know that. We just see that this is a label. For example, my real name is Maqbool Ahmed Babri and I'm called Max Babri, but I am not Max Babri. I am called Max Babri. I'm not Maqbool Ahmed Babri either. I'm called Maqbool Ahmed Babri. Alhamdulillah, I am Musliman, but I am Musliman because I was born in a Muslim family. And therefore, I also have tremendous amount of respect for people who are born in families which have different religion than mine. And it is none of their fault or none of my creativity that I am X or Y or Z. So I have tremendous amount of respect, because one thing that I know is that I'm part of this humanity and the Creator has created this humanity, and each one of us are actually part of each other. Sometimes we forget how great we really are, and yes, we do stupid things and we behave in a way which is not so great. And sometimes when we behave in such a way, then we also hurt other people, also hurting ourselves. The real catch for me has been when you say what people said when they were not at their best, and we captured it and made our script around Absolutely. it, or And perhaps that's sad. embraced it. That's sad. That's sad. And awareness is perhaps understanding that, cracking that. Okay, so we're gonna go around. आप तमाम लोग जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप अपने सवालात प्लीज कमेंट्स में लिख सकते हैं. टुवर्ड्स द एंड आप हमें वीडियो पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. अभी जैसे जो ज्वाइन कर रहे हैं हम आपको अभी नहीं लेंगे स्क्रीन पे, बट यू कैन ऑफ कोर्स ज्वाइन बिकॉज वी कैन accommodate a few of you live as well, but that's going to be later. Right now हम इस पैनल से अब सुनेंगे कि इनका डीपर व्यू क्या है. होलिस्टिक लिविंग, जो मैं इन नजरियात को अगर अपने अंदाज में मिलाऊं तो एक तो ये पहचानना है अपने आप को होलिस्टिकली पूरे व्यू से देखना कि क्या मैं सिर्फ अपना काम हूँ, क्या मैं सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन हूँ, क्या मैं सिर्फ एक लेबल हूँ, हाउस वाइफ, हस्बैंड हूँ, फादर हूँ, या मैं ये सब कुछ हूँ. और ये सब कुछ करने के लिए मैं जब आया हूँ, जो मैक्स ने कहा जिस पे कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन आने के बाद से बेशुमार चॉइसेस हैं. स्पेशली एज वी ग्रो इन लाइफ, दीज आर आवर चॉइसेस. ऑल द चॉइसेस दैट वी मेक आर अराउंड दीज डायमेंशंस. बड़े बड़े ख्यालात यहाँ इंस्टॉल होते चले जाते हैं. माइंड इज आवर पायलट, और आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा फोकस भी इस पे, और इसी के बारे में आप बात भी सुन रहे हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, और उनको भी डील करने के लिए लोग कहते हैं ओह बैलेंस व्यू, बेहतर दोस्त होना, बेहतर ऑथेंटिक काम करना, पर्पस वाली ज़िंदगी जीना, अपने लिए वक्त निकालना, दिन के अंदर कुछ ना कुछ हैबिट सामने आ जाती हैं. इमोशंस, आप जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी क्रूशल है, लीडर्स को डिफाइन करती है, आपकी सक्सेस को डिफाइन करती है इन लाइफ. सो आप इस गुफ्तगू के अंदर यकीनन बहुत सारी टिप्स उस हवाले से भी पिक करेंगे. और फिर हमारा जिस्म, जो कि वैनिटी में बहुत ज़्यादा आजकल नज़र आता है, हर कोई इसको हसीन बनाना चाहता है, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है और डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बाकी 3 डायमेंशंस को. ये चारों आपस में मिली हुई हैं. सो लेट्स लर्न इट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स इन डेप्थ. आप अपने सवालात प्लीज कमेंट्स में जमा करवाते रहें ताकि we can sort of filter them out and take the best ones towards the end. So we're going to go sort of deep dive now. We can take the same pattern again. Irfan Saab, you were first, you started it, so over to you. Take your 5.
मेरा जो अपना फ़लसफ़ा है और कॉन्सेप्ट है अबाउट holistic well-being, थोड़ा सा मैंने पहले बताया था, it revolves around, there are two aspects to it. One is about oneness and wahdiyat or wahdiyat. Okay. So to me, uh, you know, this is important. Okay. The concept of oneness, there is no duality. There is all oneness, and there is, what we call wahdiyat also. So now it involves our body, which includes our limbs. It involves our mind. Now we are forgetting something. We haven't included heart into this because qalb is absolutely important. Okay, in this. So it involves body, mind, heart, soul, and emotions. Okay, emotions, as Max would say, and maybe others would say, sometimes they are called spirit also because they combine. So the way I see in terms of oneness and Bhadiyat is that they're all choreographed. Okay, I see that as choreography by the maker. Okay, and in an ideal situation, to create what I call a stirring symphony. Okay, a stirring symphony to spread goodness. Okay, when all the above are in sync and in harmony. So to me, that's how I describe the concept of Vediyat and oneness. So some are physically manifested and some are not physically manifested. So to me, that's that. So पहला तो ये है oneness and Vediyat. दूसरा है सेहतमंदी. Okay. So obviously हम इसको holistic well-being कहते हैं, but actually I see it as सेहतमंदी. And what does it mean? That's how I define it. It starts with सेहतमंद सोच and सेहतमंद ख्यालात. Okay. To me, that's the starting point. सेहतमंद सोच and सेहतमंद ख्यालात. So therefore, and it starts with the individual जो मैंने पहले कहा था. It starts with सेहतमंद सोच and सेहतमंद ख्यालात and the individual. Okay. So how does it work? अगर हम सेहतमंद इंसान हैं, okay, so हमारा घराना भी सेहतमंद होगा, हमारा मुआशरा भी सेहतमंद होगा और हमारी कौम भी सेहतमंद होगी अगर, राइट. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो पहले मुझे सेहतमंद होना है. मैं सेहत नहीं कह रहा हूँ, मैं सेहतमंद कह रहा हूँ या मैं सेहतमंदी कह रहा हूँ. तो दैट्स अ होलिस्टिक व्यू of all 5 or 6 coming together. So now, so as I said earlier, it starts with oneself. Okay. Now, and within oneself. So जैसे मैंने गालिब को कोट किया था कि भाई अपने स्टार्ट पे यस हाँ कि भाई आईना साफ करता रहा, धूल तो मेरे चेहरे पे थी. So therefore, I believe that the question is how well are we aware of the good and the bad and the ugly inside us? How aware are we about it? How well we know and how aware are we? That is the key, by the way. Okay. So there is a good, bad, and ugly in all of us. Of course, there is in all of us. There's all of us. Right? अगर अशरफुल मखलूकात बनाया है, जैसे मैक्स ने कहा, there is no doubt about it. But एक हमारा नफ्स भी है, जो कि it is at play at the same time. So how well we know ourselves, how well we know about the good, the bad, and the ugly. Okay. The great thing is our conscience knows this. Okay. हमारा ज़मीर हमें कभी झूठ नहीं बोलता अगर उसकी आवाज़ सुननी है, और खुदा तो जानता ही है, उससे कुछ नहीं. We are totally naked in front of him, right? There's nothing hidden from him, right? So therefore, to me, everything, if you look outside, it's an illusion. It's just an illusion. It's a mirage. ये धोखा है. सब अंदर है. You got to dive within, even not to know yourself, but even to find your divine, if you go inside. So that's how I see this. So the question is, what is driving this behavior? First, we define ourselves. हम कौन है? हमारा good क्या है, bad क्या है, ugly क्या है, and be very self-aware about it, and then see what is driving this. Okay, and I know Max B is very well equipped with this, और आप भी हैं, right? So to see कि भाई अंदर का मौसम कैसा है. Are you at peace within? Is there harmony within? Okay, to me that is
and how well equipped you are to handle the storms and the turmoil within you. Okay, that is the key. And the last point is, how do we address the unconstructive behaviors or not so constructive behaviors that we display, okay, to create that stunning harmony I talked about earlier. So for me, the bottom line is, it starts with me. Right? It's all inside me. I have to look within. Okay? I have to define the good and the bad and the ugly with me. I do not have to look outside and to look for validation outside. I do not have to. And that's what we end up doing, most of us. And we talk about that later. Okay. And then, so to me, that's how, I have shaped my own life. And I will probably talk about, and don't mind, because I have looked deep inside me. And I will be happy to share that, the good and the bad and the ugly with you. I already done that when we launched our, the health, the mental health initiative, the scheme, which I co-founded, the scheme.org. तो उसमें मैंने I went public on my, so if अगर time हुआ तो बताऊंगा अपने बारे में. I've been very honest with myself. Okay? And then once you're honest, once you are truthful about yourself, then you know, okay, अब इसका क्या करना है, right? And there are various ways you can then, approach this and trying to bring that balance. But last thing, ये जो है ना, the concept of achieving balance, okay, right? बड़ा मुश्किल है. और ये हमने ओवर एनालाइज कर दिया है इसको, टू बी ऑनेस्ट, लिटरली ओवर एनालाइज कर दिया है, राइट? सो ये अगर इस दुनिया में आए हैं जो कि इम्तहान है और एक स्टेज है, राइट, तो कहाँ से बैलेंस आएगा यार? नॉट पॉसिबल, टू बी ऑनेस्ट विद यू. दैट एटलीस्ट आई सी, राइट? कभी आ जाता है, कभी नहीं आता. आ गया तो खुश है, वापस you have to one step forward, two step back. For that's how life is. At least this is how I see it. तो मौका मिला तो मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा. Sure. Thank you, Irfan Sahab. Wonderful. From oneness to inside you, going deep inside, not seeking validation outside. Connect. कि आप सेहतमंद, घराना सेहतमंद. That's what neighborhoods become. That's what communities become. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा इससे पहले कि हम अगले पैनल से deep dive कराएं. वो ये कि आपने you've been an entrepreneur, you've sort of corporate and then entrepreneurship, and you've had a very, very busy life. So much happening around you, so much money, so much enterprise, so much opportunity. और हमारे पास जो सवाल है वो भी, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स लिंक्डइन पे ज्वाइन किए हुए, तो वो ये कि how do you see your own conversation and give it to somebody who's on that track, who's not Irfan Mustafa yet, not that level of success, but is growing into it? देखो, मैंने I think I tried to answer. See, what I did, of course, alhamdulillah, काफी कामयाबी हुई है, but at a price, and at a huge price, by the way. Okay, I have suffered, my family has suffered, right, deeply because of this. There's no joke about it. I mean, I'm serious when I say this. I have suffered, and my family have suffered, because हुआ क्या, with this single-minded focus on achieving excellence, achieving stature, achieving fame, पैसे बनाना. What has happened, and Max would know very well, I suffered from three things: attachment, expectation, and identity. Right. और मैं अपने नफ्स का गुलाम बन गया, totally अपने नफ्स का गुलाम बन गया. Right. So I was so damn busy कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं था और मेरे लिए दूसरों के लिए टाइम नहीं था. Right. अब जब थोड़ा सा मौका मिला है to sit back and look at many years, I realized, look, ये काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ, to be honest with you, right? और therefore my advice to my younger generation is, right, और I think Maddi ने भी बड़ा अच्छा कहा है कि यार पैसे के पीछे मत भागो, फेम के पीछे मत भागो. Do what you think is right. Do follow your passions. Okay? Make sure you define your passions, and then do them diligently. Okay? And go after them. बाकी जो उसका जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके हाथ में नहीं है, बट वो अच्छे होंगे. So process is more important. Adventure is more important than the outcome itself. To me, that's what I've learned, to be honest. Oh. Thank you. Well said, Irfan Sahab, and thank you for pouring out so candidly.
This coming from somebody like you, is a reminder to all of us that we've got to have our journeys set right. We've got to keep looking at और कुछ comments भी ऐसे ना मैं ये इसलिए भी फ्लैश कर रहा हूँ कि आने वाले पैनल्स को शामिल करें. रंजीत हमारे दोस्त ने कहते हैं, आई बिलीव nobody can balance anything. Work life balance is a big myth as well. With that, the next one, Max, would you like to be the next one? Sorry, you're on mute. I'll just unmute you. Mute. Max, can you unmute? StreamYard now has a permission issue. I was on mute. I'm sorry. And the moderator has no right to unmute the guest. Yeah, I was muted. I'm sorry, I was muted because मैं बोलता बहुत हूँ, मैंने अच्छा किया बंद कर दिया अपना. मैं ये कह रहा था कि let's listen to Maddi and Urooj also and shuffle the order a little bit and so get some more diversity as well. Okay, so I completely agree with Mustafa bhai anyway. So Irfan Mustafa. Urooj or Maddi? No, I can go. Yeah, Urooj. Ladies first. Irfan Saab, such wonderful things. Absolutely learning while being on the panel. I love the analogy of symphony. और इसी तरह मैं भी एक analogy के साथ चलना चाहती हूँ. I think आप ऐसे समझें कि आपके जो parts हैं जिनको मैंने refer किया था, वो आपके अंदर कोई आपने कमेटी लगाई है, आपकी board members हैं, जिनका मकसद ये है कि वो सारे साथ काम करके आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे, आपकी ज़िंदगी को फुलफिल करेंगे. आपके ये 4 मेंबर्स हैं, बट व्हाट वी हैव बीन डूइंग इज बिकॉज सारे जो लोग हैं, मजमा है, उन्होंने कहा है कि सुनो, तुम ये वाला जो मेंबर है ना, ये बहुत अहम है, तुम इसको दो क्योंकि ये तुम्हारा स्पोक्स पर्सन है. जो बॉडी है ये बहुत ही लोगों को दिखती है, इसकी विजिबिलिटी, इसका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, तुम इस पे लगा दो पैसे और एनर्जी और रिसोर्सेज. या ये तो कोई देखता नहीं है सोल को, चलो इसकी बारी बाद में दे देंगे, इसको आखिरी में. जैसे मैक्स ने शफल किया, हम वी टेंड टू फॉल इनटू दीज पैटर्न्स, राइट. व्हाटएवर पैटर्न एक दफा बन गया, हम उस पैटर्न पे चलना शुरू हो गए. तो ये जो 4 मेंबर्स हैं, इनका मकसद है साथ काम करना. It's not even a matter, and I love again, Irfan Saab, you use the word sync. They have to work in sync, and to work in sync, they have to communicate with each other. हमने इनको 4 डब्बों में, 4 कमरों में बंद कर दिया, अपना अपना काम अलग करो. They're not able to give the secrets to each other. They're not able to come together in like the team build. तो वो कुछ नहीं हो रहा. और हम कह रहे हैं कि हमारी एम्पायर सक्सेसफुल क्यों नहीं रही. हमने तो बेस्ट अशरफुल मखलूक़ात है, तो हमारे पार्ट्स भी बेस्ट हैं. Of course, like God, whoever you believe to, it has put his spirit in you. So then each part of yours is the very masterpiece, right? Like from the Darwinian theory, all of that. So then why are these parts not combining to create a masterpiece of a life? Right? Because they're not in communication, and because you as the founder, parent, whatever analogy you want to use for it, आपने उसको equal नहीं है. तो आप समझ लें, all the parents, whether you've had parents and you realize कि भाई बड़े भाई या बहन को बहुत मिलता था और मुझे नहीं मिलता, as a result of that मैं नहीं इतनी confident to whatever. So these parts are not in communication with each other. So to undo this, what you need to do is you need to find the balance. So like I said, to live fully, you need to be mindful of इस वक्त तराजू किस तरफ आया हुआ है. ये भी जो मैं बार बार बॉडी का बोल रही हूँ, also because you know I am a more emotional person, which also by the way means कि, और I think मैक्स ने भी बात बोली, इरफान ने भी बात बोली, मैडी ने भी हिंट दी, लेकिन सवाल आता है कि हम बैलेंस कैसे करेंगे. रंजीत ने बोला, आई थिंक राइट, रंजीत ने बोला. तो रंजीत, बैलेंस विल लुक डिफरेंट. I am openly saying I am a person who prefers more emotion. I prefer to give more share to my emotion. Somebody may prefer to do something. And so this balance will look differently for you. You will have to sort of find your balance. क्योंकि ये आपकी कंपनी है, आप ही इसको बेहतर जानते हैं. तो प्लीज़ किसी चीज़ को प्रिस्क्रिप्टिव मत कीजिए कि उन्होंने कहा था कि इतने घंटे ये करेंगे या जर्नलिंग करेंगे या सेल्फ केयर करेंगे तो ये हो जाएगी. Coming back, of course, I want to share some examples, and I think maybe मैंने comments में देखा था कि कोई real life example बताइए. As a जब मैं किताबें पढ़ती हूँ, बहुत कम पढ़ती हूँ ऐसा, आपको full disclosure, लेकिन one of the late कभी कभी पढ़ती myth of normal मैंने latest पढ़ी है. गेबर मार्टे ट्रॉमा एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हुआ करते थे, वो इस लाइन में आ गए, ट्रॉमा पे बहुत बात करते हैं. और मैंने जो लबलबा भी सोचा है कि उनकी तकरीबन हर किताब के जो 70% पीस होती है, इफ यू रेड, लाइक वो ये कनेक्शन दिखा रहा होता है कि हाउ ट्रॉमा लॉजेस इन द बॉडी और फिर वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके जिस्म में. तो यू नो जो आपका इमोशनल हीलिंग वुंड है, जो आपको
तकलीफ चोट पहुंची हुई है जो दिल स्पिरिट पे सोल पे हुई हुई है वो कैसे मैनिफेस्ट करती है ऐसी बीमारियों जैसे कैंसर very very big बीमारीज and while this is a research, I was speaking yesterday to a very dear friend of mine who's going through battles of cancer, and she has, of course, she's of course a therapist as well, so she has also in her journey realized that it all comes down to an emotional, something emotional that led for it, right? लेकिन हमने सीखा नहीं है, हमारे डॉक्टर्स नहीं पूछते कि अच्छा अगर तुम्हें ये दाना निकल रहा है तो आजकल तुम क्या फील कर रही हो, या तुम्हें ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ है रिसेंटली, राइट? वी डोंट लुक एट थिंग्स होलिस्टिकली, ये सारे पार्ट्स को इकट्ठे लेके चलते नहीं है. सो अगेन कमिंग बैक टू द बोर्ड मेंबर, यू डू नॉट गिव इक्वल वोटिंग राइट्स, you do not give equal rights to say no, yes to different parts, और वो फिर कनेक्शन होता है. तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली की इज टू गेट द कम्युनिकेशन गोइंग. जैसे मैं कहती हूँ एक नया रिश्ता है, सो टुडे ऑनवर्ड्स यू कैन से अच्छा मुझे नया रिश्ता लगाना है अपनी सोल के साथ, अपने माइंड के साथ, अपने इमोशंस के साथ. तो पहले तो वो आपको ट्रस्ट ही करेगा ना दिल. इतना आपने दुत्कारा है, इतना उसको साइड में किया है, उसको लाइक यू नो आखिरी में आप तुम चलो आखिरी में बारी आ जाएगी फलाना ढमका. सो देन इट्स सो यू विल हैव टू लर्न टू गेन द ट्रस्ट ऑफ दैट पार्ट कि I mean well for you, you know, I am looking out for you. You mean to say that I can lose trust from my own dimensions? Absolutely. The heart, especially the heart. I feel like the inner child in us, the heart in us, can learn not to trust because अगर तो बार, if you keep prioritizing the head, or if you keep prioritizing तुम्हारा जिस्म है, राइट? अब you keep saying मुझे जिम जाना है और वो तुम्हें तकलीफें दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, बट यू नहीं हमें करना है बिकॉज वो जो मॉडल है इंस्टाग्राम पे वो तो उसकी ऐसी फिजिक है या उसकी ऐसी बॉडी, तो हमें तो ऐसा करना है. एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू द पेन विच इज़ अ लैंग्वेज. तो फिर इवेंचुअली इट्स लाइक फाइन, मैं भी गिव अप कर देती हूँ, तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ, राइट? सो आई थिंक लाइक आई डोंट वांट टू गेट टू लॉस्ट इन टू मेनी थॉट्स. आई वांट टू ब्रिंग इट बैक. Harmony, right? If you want the board of directors of your company, which is your life, to work in harmony and to give you the best results, you have to put them together on the same table, give them equal rights, and equal mean जिसकी जो job description है उसके बाद से, as well as get the communication going. And communication किस चीज़ से सबसे बेस्ट होती है? हम किसी से भी किसी महफिल में जाते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं? Hi, how are you? Check in. So just check in and say कैसे हो यार, दिल को, soul को, heart को, how are you? And not just like Khana Puri, but really ask how are you, and the miracles of this check-in. That's it. Okay, I think my 5 minutes must be done. I should pass it back. So just to sort of reiterate, in dimensions को persons बना लें. ये Yes. आपका बोर्ड डायरेक्टर है, बोर्ड आपका बोर्ड है, हर Yes. बोर्ड मेंबर के पास इक्वल राइट्स हैं, वो कह सके अपनी बातें, वो इन्फ्लुएंस कर सकें इस कंपनी को. ये कंपनी आप है. बिल्कुल. और That's it. बोर्ड मेंबर्स का आप ट्रस्ट भी लूज कर सकते हैं, वो रियलाइज कर सकते हैं मेरी तो सुनता नहीं है, मैं क्यों बोलूं. ऐसे बोर्ड मेंबर्स भी अपने देखें. ऑन दैट नोट, मैडी, let's listen to you. Yeah, go on. उमैर साहब, कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं जहां दिल करता है कि इंसान सुने ज्यादा और बोले कम. ये वैसा पैनल है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऑडियंस मोड में चला जाऊं. मेरा बखुदा ऐसा दिल कर रहा है कि मैं बस सीखूं. आई एम टेकिंग सो मेनी नोट्स, इट्स अमेजिंग. मैं चंद सेंट्स अपने तो as far as holistic living is concerned, I think we're on the same page more or less. तो मैं उसमें ज़्यादा deep नहीं जाऊँगा. What I think of holistic living, it is a combination and awareness of your mind, body, soul, hearts, all parts of you, all board of directors of you. It's an awareness and it's a management, and then you strive towards balance, which is our caption phrase, right? Striving for balance. The strive part, ये जो जहद है, ये जहाद जो करना है आपने, ये because you are not in balance, you're acknowledging that you're not in balance and you're striving towards it. But at the same time, जब हम बात करते हैं कि ऐसे तकवीन, सबसे बेहतर क्रिएशन, अशरफुल मखलूकात, फिर ये स्ट्राइव करने की जरूरत क्या है? अगर मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा हूँ, परफेक्ट हूँ, सारे बैलेंस में हूँ, तो फिर ये मुझे जहद करने की क्या जरूरत? आई थिंक तो होलिस्टिक लिविंग पे जो डेफिनेशन की हद तक वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, मैं उसमें नहीं जा रहा. तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे करें? ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनसे मुलाकात जो आपने कई अरसे से नहीं की, कोई सिर्फ अपने दिल की सुन पे चल पड़ा है, कोई सिर्फ अपने दिमाग की धुन में चल पड़ा है, कई साल गुजर गए, उसने अपने दिल की सुन पे मुलाकात ही नहीं की. बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अब सिर्फ रूह पे चल रहे हैं.
जो सिर्फ रूहानी चल रहे हैं, उन्होंने जिस्म को और दिमाग को बिल्कुल ही बैक सीट दे दी, right? And we see stages and phases of, you know, people who disconnect and go in hermit mode, you know, 3-4 साल 5 साल गायब, और वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी में जा रहे हैं. तो आई थिंक अब हम अपनी ऑडियंस को ना, मैं उन टूल्स की तरफ आऊंगा कि ये शुरुआत कैसे करनी है, इस ड्राइव की, इस बैलेंस की तरफ की कहानी क्या करनी है. मेरी एक नज़म थी जो मैंने, शायद मेरा जिंदगी का पहला गाना, द फर्स्ट सॉन्ग आई एवर रोट, उसमें कुछ इसी तरह के सवाल थे. इट वाज व्हेन आई वाज यू नो कॉलेज, शायद फर्स्ट ईयर की बात है, कि हम हैं कौन, कैसा ये सिलसिला, हम हैं कौन, कैसा ये सिलसिला, क्यों यहाँ पे आए हम, क्यों ये जीवन मिला, क्यों बना ये जहां, क्यों बनी ये कहकशां, ख्वाब तो ख्वाब हैं, ताबीरें हैं कहाँ, हम हैं कौन, कैसा ये सिलसिला, क्यों यहाँ पे आए हम, क्यों ये जीवन मिला. The start of these questions will get you started on the journey, and it is the journey that matters. There is no destination. ये शुरुआत जब आप अपने सेल्फ अवेयरनेस से शुरू करें, बी सो completely self aware of yourself, get to know yourself. अपने आप से, ये उरूज वाली बात को आगे ले रहे हैं कि अपने आप से डीपर मुलाकात करें, अपने आप के साथ जरा वक्त गुजारें. Get to know yourself. मेरे अंदर के डायमेंशंस क्या हैं, मैं किन बातों पे चिढ़ता हूँ, मैं किन बातों पे हसद करता हूँ, मैं किन बातों पे गुस्सा खाता हूँ, मैं किन बातों पे टल्ली हो जाता हूँ, मैं मेल्ट हो जाता हूँ, कौन सी ऐसी बातें. गेट टू नो योरसेल्फ, अपने आप से ये डीपर मुलाकात. और ये डीपर मुलाकात का मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप इजाजत दें तो 3 S हैं. एक है साइलेंस का, एक है स्टिलनेस का, एक है सॉलिट्यूड का. वाह. अपने आप से जब आप ये मुलाकात करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि दुनिया की एनवायरनमेंट में तो ये इजाजत ही नहीं दी जा रही हमें. मेरे पास तो खुदा से मुलाकात करने का टाइम नहीं है. यहाँ पे मेरी मीटिंग्स और मेरे काम और मेरे सारे मामला, मैं अपने आप से कब मिलूं. ये मुश्किल, ये जो डिस्कनेक्ट है ना, गेटिंग टू नो योरसेल्फ, यू डोंट हैव टाइम फॉर इट, सो यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट कि आई शुड, ये एक मीटिंग है जो मेरे कैलेंडर पे कभी सेट होनी चाहिए. There's no meeting on your calendar yet with yourself. You know, set up a meeting on the calendar. Just do these 3 things. Get to know yourself. How? Silence, खामोशी, अंदर की बाहर की. Stillness, ठहराव, कि आप जमूद में हो, आप खामोश में हो और एक जगह पे प्रेजेंट हो. And silence, stillness, solitude, अकेलापन. Please disconnect from your environment and get to know yourself. Because इसकी अभी इस तरह जरूरत पड़ेगी, because आप प्रैक्टिस में नहीं है ना. कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिस में होते हैं, वो अपने साथ बहुत टाइम गुजारते हैं. They're like, वो अकेले होते ही नहीं है. उनकी तन्हाई में उनका अपना साथी वो खुद होते हैं, वो प्रैक्टिस में होते हैं, उनको पता होता है, अपने आप से बातें करते रहते हैं, जो बाहर की दुनिया को पागल नजर आ रहे होते हैं. यानी क्या हर वक्त अपने साथ में लगा रहता है. Because they're consistently in touch with their inner self. Get in touch, get to know. How do you do this? Find stillness, find solitude, find some silence. Don't talk. Listen. Get to know yourself. And that's how maybe, inshallah, your journey will start. Wow. And I pass the man. Thank you for that. Wonderfully said. Silence, stillness, and solitude. Wow. Remarkable, Whether Maddi. you feel you are enjoying solitude or you're lonely, what is happening in बहुत बड़ा डिफरेंस है सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में. आप अकेले हैं या आप तन्हा हैं, you know, बहुत बड़ा डिफरेंस है. Being lonely and being in solitude. Yeah. You know, as we grow in life, I like adding the other dimensions as well. And while this is beautiful, the other side is equally true in the balance thing, which is not silence, but listening to the music of nature, every instrument, everything. You know, there is a whole lot that instead of stillness, there is research now which tells कि हम मुख्तलिफ postures में मुख्तलिफ चीजें सोचते हैं. इनफैक्ट कुछ postures में हम कुछ चीजें सोच ही नहीं पाते. So you know, just walking around or lying down, your brain chemistry, instead of just being with your own self, being with, you know, the opposites, or being with those whose energies probably you want to attract. So you know, they balance the other side as well. But I love what you said, and these are of course many rituals now, और बहुत सारे लोग ये अपनाते भी हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है ताकि ये चेक इन चलता रहे. एक और बात जो आपने की, जो अक्सर हम थेरेपी में सुनते, get in touch, and this is not, hey, we'll stay in touch. This is staying in touch with your own self. Beautifully said. Thank you for that, Maddi. And I'd agree with Ikra when she says Maddi is making so much sense. Okay,
Max, would you like to wrap this up? And then I'd like to invite जो तमाम लोग हमें सुन रहे हैं, thank you very much for that. आप अपने सवाल जो आपने post किए, we'll keep taking them, and we're also inviting you to join us on the video. Here is the link, and this is also posted in the comments, so some of you can join us on screen after we are done with Max. Not done with Max, after we've heard Max's wrap up all that. Irfan sir, you want to say something? Yeah, मुझे Max एक request करनी है because I think he can answer this. Okay. कि Urooj said कि कमिटी में बोर्ड है, कमिटी मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे. मैडी कहते हैं कि साइलेंस, सॉलिट्यूड एंड स्टिलनेस, राइट, ऑल सेड, वेल डन. हम करते क्यों नहीं? टू मी दैट्स द इशू. ओके, ये हम सब ने पढ़ा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है. टू बी ऑनेस्ट विद यू, करते क्यों नहीं है? What the hell is going on, right? To me, that is the issue that we need to address. Okay, so maybe Max can, he's an expert in this, and he can talk about this, and of course, he share. Because to me, thank you for that, Irfan sir. क्योंकि मेरा अपना personal challenge भी है, to be honest. Yeah, I'll be honest with you. नहीं कर सकता मैं. Actually, I was enjoying listening to remarkable presentations by all three of you. इरफान तो खैर पुराने बड़ी उनकी सुनते रहते हैं, अरूज को सुनने का मौका मिला, मैडी को. Remarkable ideas, remarkable thoughts, very penetrating, very deep, very reflective. So thank you for being in this group. So I would start off by saying that कुछ पर्पस की भी बात कर लें कि पर्पस की क्लैरिटी अगर नहीं है तो फिर गोल्स हमें नहीं मिलते, रास्ते नहीं मिलते, डायरेक्शन नहीं नज़र आती, माइलस्टोन्स नहीं नजर आते. और मदी ने बिल्कुल सही कहा, डेस्टिनेशन की बात नहीं हो रही, जर्नी की बात हो रही है. सो लेट मी जस्ट पुट अप टू स्टेटमेंट्स एंड आई विल एक्सपैंड अपॉन दैट. फेमस स्टेटमेंट है कि सम पीपल आर सो पुअर दैट दे हैव नथिंग बट मनी, and the other statement is that some people have attributes that no amount of money anywhere in the world could ever buy that. Wow. So just think about this for a little while. Yes, questions have come. I think money is important, but money is a byproduct. Money, resources is not the goal. Because the goal becomes money, then the purpose goes out of the window. So let's also try and put it together, things that Maddi has said, and also Urooj and Irfan. Also, let's take the board member and people. So if the chairman of the board is there to sustain himself or herself, then the company is going down the drain. So the chairman of the board is actually the chief servant of the organization. So the chairman of the board is there to serve all the components of that organization. What is an organization? Organization means components put together with rules and regulations and methods of communication and supporting each other and providing input and output so the whole system can grow tremendously. Like heart sends oxygenated blood to all parts of the body. Lungs interact as an input-output situation where it inhales, takes in the oxygen, and exhale the pent-up oxygen, and when it goes into our lungs, the red cells in our blood pick up that blood and take it to the heart, and heart pumps and it goes everywhere. So every part of the body gets revitalized, energized, healthy, and happy. And all these elements of the body, without formal communication, just continue to do this because their own survival is subject to how well they serve me, my body, my heart, and my nerves, and my blood vessels, and my bones. Their own survival is dependent on how well they coordinated they serve me. And why should they serve me? Because I am somebody who may also be serving the nature. And serving the nature is bringing us to the holistic view of the world. Means that in the first, at a human being level, it is so much essential to have empathy for fellow human beings. Empathy in terms of emotion, what they might be going through, what is the situation, what am I eating, what am I spending, where am I living, how much is the wastage in that, how much is the consumption in that, and am I sensitive and mindful of what is happening around me. So that's an important part. And it's not only, the first level is of course human being and human being, and the second level is human being and beyond human being. There are animals, there are plants, there's nature, there's the environment, and all those things, and becoming more and more sensitive
to that also. Every time we use pesticides, we are actually also killing ourselves. Every time we use mosquito repellents in our bedroom and bathrooms, or cockroach killing substances, we are also poisoning ourselves. So mindful of what we are doing is also important. Yes, people have talked about resources and money, and of course, young people, they've been drummed into their mind to be successful, successful, successful. Unfortunately, in most of the cases, the parents, when they talk about success, they are talking about not that you have earned respect in society, but the size of the car or the size of the house and the size of the bank balance. Unfortunately, the size of the bank balance, the bigger it becomes, the more poorer people it generates around us, because the money gets out of circulation. And the money is only beneficial, has value if it's in circulation. So if it's accumulated, like in the world today, US and everywhere in the world, there are a very small percentage of people who have almost half of the monies put in their banks. And of course, the money has gone out of circulation and there will be poverty around us. But so coming back to this again, important thing is to be mindful, and certainly to reflect, which is the silence and listening to and giving yourself space. हमारे टीचर होते थे डॉक्टर मोहम्मद अजमल. दो कोट करूंगा टीचर्स की बातें. Dr. Mohammed Ajmal, he died. He was head of the Department of Psychology, Government College Lahore, and then became vice chancellor, and then he became started a university, the federal government, Qaid-e-Azam University of Psychology Department, and he rose. He's a remarkable human being. So he, in Punjabi, used to say, "Ke fakir da call e baitha raho te safar kar." And what that meant was that stay put and let your mind travel to thoughts, ideas, and suggestions, and reflections, and inside, and outside, and around. So let the mind work. You don't have to go. Remain in peace and remain with yourself, and let it go and roam around. So this is one teacher who is teaching us patience, calmness, awareness, knowledge, your own role in society. How are you going to contribute? What is your purpose? And I'm not suggesting that our purpose is a fixed purpose. Our purpose, for me, it's a very dynamic purpose. Today is something, tomorrow it's something else. And of course, I'm open enough and relaxed enough to acknowledge that yesterday I was wrong, or yesterday, and so on and so forth. So just one more, I'll conclude very quickly. So another teacher was this man called Gil Boyne, from whom I learned hypnotherapy in the United States. So Gil was a remarkable man. He was at that time also 93 or 94-year-old, very energetic and very enthusiastic. तो हम जो उस वक्त यंग लोग थे जो उस गिल बॉयन से पूछते थे, गिल बॉयन, हाउ आर यू टुडे? ही यूज्ड टू से, आई एम वंडरफुल. इसी तरह कहता था, आई एम वंडरफुल. तो हमने आपस में एक दूसरे के कान में कहा, यार ये बड़ा बंदा नशे में है, इसको ना ये अपने आप को बड़ी कोई शय समझता है. So one day we confronted him and we asked, you're not that special. You're a fellow human being like everybody else. And you must also have humility. And what is it that you keep saying, I'm wonderful and I'm wonderful? वो कहने लगा, in the morning I open the window. He used to live in, Northern California. तो मैं पर्दे निकालता था, खोलता हूँ अपने उसके, तो मुझे आसमान नजर आता है और गार्डन नजर आता है, और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, नए फूल उग रहे हैं, तितलियां फिर रही हैं एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर, मुझे नजर आ रहे हैं, बेतहाशा रंग हैं, और जो एवरी डे देयर आर न्यू कलर्स इन द स्काई, सनलाइट, ये मौसम कौन सा है. So when I look at all those things, I see a newborn baby and I see these classes being done, and I notice that I am 94 years of age. So I become more and more full of wonder how this all things have been put together by the Creator. So how all these, and he was a Christian. So all these things have been put together by the Creator. So Max, when you ask me, how am I? So if I was not saying to you that I am wonderful, which actually means I am full of wonder, मैं हैरान हूँ, मैं खुश हूँ कि कुदरत के निज़ाम ने मुझे कितनी ज़बरदस्त जगह दी है, कितना अच्छा मौका दिया है, कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है, कि काम करने का मौका दिया, और 94 की उम्र दे दी है कि मैं काम कर रहा हूँ, and I'm still alive and kicking. So I think it's a great idea to, at one level, to believe that I am very special, special in the sense of what I can do, not special in the sense that what will happen to me. And what will happen to me will happen as an ordinary, simple human being. Could happen to anybody. But the thing is, when we begin to focus on who I am, as in vanity, then we get trapped into a very
terrible situation of what success is. Success actually means that you are happy outside, you are happy inside, and people that you interact with you, people who interact with you, they leave you. When they leave, they feel good about themselves and they feel happy about who they are, and they can also generate happiness for other people. Wow, you're wonderful, Max. And I I don't keep, mean it I in the keep, sense I keep saying that. I keep telling people to repeat that. I am wonderful. you know, I'm just quick reflection. मैं 35 साल का हो गया और मैंने कोई पौधा नहीं उगाया था और फिर मैंने कोविड में पौधे लगाना शुरू किए एंड सिंस देन यू नो आई फील द सेम वे अबाउट नेचर एंड आई हैव गॉटन सो एक्साइटेड अबाउट how all these ecosystems from the bees to the plants to what is happening around us to what we keep hearing about the space and you know sometimes I just think that what if you know the news had something from nature something that we have found today and as a source of inspiration because all you hear from people is a complaint about a system a human made system not working and that is so much ignorance because so much around us is happening and working um, Arshia, you've joined us quite a while. If you want to come up, अपनी video on करके अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं, आप पूछ सकती हैं. The rest of the people, here is the link. We have another 18 minutes to go, and you can join us for a Q&A here. If friends are here, if you want to say something, please feel free to add your piece. To all the panelists here, we're going to do this interactive now. So I'm going to pick up questions, and so feel free to contribute. And if there's something that you would like to add before we go to the questions, this is the opportunity. Irfan Sahab, I think you were saying something. Please do. Yeah, dekho, you know, I'm still struggling, to be honest with you, right? End of the day, you know, issue is we have to define the good and the bad and the ugly about ourselves. हम क्यों नहीं करते हैं? To me, I asked that question earlier also. Okay. What is the barrier that stops us from going within? Okay. क्या खौफ है हमारे अंदर कि अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या मिलेगा, right? क्या छुपा हुआ है? So there is a huge barrier and there is a huge stigma around it. Okay. So to me, that's a big issue. Okay. एक तो ये है कि भाई key is to go deep inside and find out what is good and the bad and the ugly. And I did for myself. Okay, I tell you. Okay. And I know where it came from. It's been a long journey. So today, to being very, honest and doing the disclosure, I'm in my 74th year. Okay, 74th year. Alhamdulillah, God has been kind, right? I still suffer from jealousy. Okay, I still suffer from greed. Okay, right? I still have resentment and grievances. I would not hide, by the way, right? Seriously, right? And I still I'm angry. Okay, right? So therefore, right? So when I looked at it and I went deep inside, I realized that I'm captive to my nafs, okay, and to my ego. Okay, right? I have allowed my ego to conquer me and to take charge of me, right? So therefore, I'm all here, but there's nothing here at the heart. Right? I don't feel anything. I don't experience anything. I'll be very honest with you, right? So to me, that's the key for everyone. For heaven's sake, go deep inside. Be honest with yourself. Be ruthless, okay? Stand in front of the mirror, okay? And look straight into your eyes and say, यार, मैं कौन हूँ? Okay? And be honest. जब ये पता क्या है जब अपने आप को देखोगे ना तो what we call is Sarah. We say, are you carrying Sarah with you? Which means Sarah जब अपने आप को पहले देखोगे या कोई तुम्हें बताएगा तो तुम्हें पहले शॉक होगा. This is not who I am. This is not who I am. Big shock. Okay. फिर उसके बाद आता है एंगर. एंगर जब आएगा थोड़ी देर के बाद फिर आता है रिजेक्शन. This is not who I am. And the last stage is acceptance. जब acceptance आती है, then you are in that chain to start addressing these concerns. To me, that is the bottom line. So when I address to my younger generation, please, for heaven's sakes, go deep inside. Be honest about yourself. Go deep inside. Yeah, this is where you find the divine also. Okay. There is nothing outside. It's all illusion, to be honest with you, right? सब कुछ अंतर है हमारे. So to me, that is, I think, what I would want to be discussed and addressed. Okay,
and I'm seeking help, Max. Okay, and you know that I came to you also, right? And and I've been seeking help for many years. Okay? Now I've gone on a spiritual journey, okay, to see how I can address my issues. Okay? Of So course. ये एक एक सिलसिला है, चलता रहेगा जिंदगी का. मगर जो यंगर मुझे जनरेशन है, yes Max. Can I take just 1 minute? I will just take 1 minute, and I'm out of turn, and I'm certainly like Urooj also to comment on this. I think first step in our journey has to be reflection and recognizing and accepting that this is who I am. Correct. It is the denial which causes problem. That is Not correct. thinking that I am perfect. To have this capacity and capability to look at oneself and say, yes, I'm a good human being, I'm a great human being, but I may not have been behaving like a great human being, or sometimes my thought process has not been that great that to which extent I've been actually created, and I have accumulated little viruses. So that's the first step. And then the second step is what I say to my co-counselors or people that I hypnotize also, I say, you are not the mistakes of your past. You are what you want to be tomorrow. And let go. The mistakes of our past are our experiences, and experiences can never be liabilities. Even if it's a bad experience, even if I've been molested in my early childhood, Correct. it's a bad experience, a terrible experience. I'm not suggesting this happen to others, but that has taught me how to protect my kids from perpetrators. So all experiences, in my opinion, are assets. Please माफ कर दीजिएगा, बहुत open circulation के लिए नहीं है, लेकिन all experience are assets. Because we've learned from them. And once we've learned from them, we also learn that these people who treated us badly are not bad people. मेरे रब ने ही उनको बनाया है, but they are in a bad place, or they have learned some bad things. So उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करनी है, क्योंकि अपने रहमान से अगर हम ये कहेंगे कि जब तक इसको हजारों साल जहन्नम में नहीं आप जलाएंगे तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा. It's a tremendous amount of burden that I'm carrying, and then I'm asking the Creator, who says I am Rahman, to punish somebody. What kind of prayer are we making? So please let go, and we can let go others, then we can also let go our mistakes of the past. Absolutely. And when right. we let go of those mistakes, we can really blossom the way we deserve to blossom. Thank you, Max. It's almost like your level of empathy is so much. You can read my notes and you know what I want to say. So, can I jump in, Umair? Please, मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट की थी because हाँ बिल्कुल, मैंने कहा मॉडरेटर वो है ना, हायर पावर यहाँ पर. अच्छा. So I want to build on what Max is saying, and also सवालात भी आ रहे हैं कुछ, हम क्यों नहीं करते. और इरफान साहब आपने भी कहा कि सारे स्टेप्स तो हमने बता दिए, हम क्यों नहीं करते. आई थिंक द बिगेस्ट रीजन इन माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इज कि हम वो डिस्कम्फर्ट की वजह से, क्योंकि अंदर जाना बहुत खतरनाक और बहुत मुश्किल है. मैं आपको बताऊं, जब मैं 50 मिनट की थेरेपी स्टार्ट करती हूँ, मेरे क्लाइंट को सबसे मुश्किल मेरा पहला सवाल लगता है हाउ आर यू, क्योंकि उसको पता है फाइन तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी. तो जब मैं कहती हूँ नहीं बताओ कुछ इमोशन कैसे अंदर, तो वो कहता है नहीं ये दिस इज टफ. लाइक क्लाइंट्स हैव बीन सेइंग फॉर अ ईयर विल से ओह माय गॉड दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन. ये चेक करना कि मैं इस वक्त कैसी हूँ, मेरे इमोशंस कैसे, ये बहुत मुश्किल है. इट्स सो मच ईजियर टू स्टफ माई फेस विद खाना, to go do कोई और हेडरिस्टिक चीज, तो बाहर चली जाऊं, इवन ऑटोबाइक समटाइम्स लाइक ट्रेडमिल पे जाके भाग लूं, कुछ भी कर लो. जब स्टिलनेस की बात आती ना तो वो कहते हैं कि बस स्टिल हो जाओ, लाइक कुछ भी ना करो, लाइक सोचो भी नहीं, मेडिटेशन में भी स्टिल हो जाओ. तो वो बहुत मुश्किल है. एंड नीम जमींदार के साथ मैंने आर्ट ऑफ लिविंग सीखा. ही सेड व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स. तो मैंने उर्दू में कहता जिससे आप लड़ेंगे वो बढ़ेगा. राइट, अब लड़ता है तो बढ़ता है, कि हम लड़ते हैं अपने अंदर के शैतान से, अंदर के इमोशन से, अंदर की गुड बैड एंड अगली से, तो वो तो बढ़ते ही चला जा रहा है. एंड आई एम गोना क्विकली रिकैप अनदर. एक तारा ब्राक होती हैं, एंड यू पुट द नेम इन देयर मेडिटेशन, शी डज व्हाट TARABRACH. वो एक स्टोरी बता रही थी एक बार कि समझ लें केव में, एक गार में एक आदमी जाता है, एक मॉन्क जाता है, और वो मतलब मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है और अपनी वर्शिप करने की कोशिश कर रहा है. और जैसे वो करता है तो 2-3 बड़े बड़े डेविल्स अंदर आ जाते हैं और उसको तंग करना शुरू हो जाते हैं. तो वो अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस छोड़ के, अपना काम छोड़ के उनसे लड़ना शुरू हो जाता है. उनको लड़ता है, उनको
निकालना चाहता है केव से कि भाई निकलें ताकि मैं यहाँ पे अपना काम कर सकूं जो मुझे करना है, टू नो अवेल। एक दिन जाता है, दो, जितना वो लड़ रहा है वो दिख रहा है कि उनकी फौज बढ़ती चली जा रही है। तो उसने थक कर फिर एक पॉइंट पे उसने थक कर कहता है कि यार चलो आज मैं नहीं लड़ता, थोड़ी देर मैं और आप थोड़ा मैं काम कर लूं। मैं देखता, वो जैसे ही देखता तो वो देखता है समहाउ वो आर्मी आधी हो जाती है। कहते हैं, पता नहीं क्या बात है। फिर वो उनको कहता है मैं समझाना शुरू करता हूँ सम, एंड द स्टोरी गोज लाइक दिस, द मोर दे लाइक दे रियलाइज इफ आई स्टॉप फाइटिंग दिस it will work, and then as they stop fighting it just flows. So when you accept it will almost melt. मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इट इज़ व्हाट इट इज़ विदाउट एनी जजमेंट। मेरे अंदर ये है, ये जो सवाल जो वो है ना, लेकिन हम क्या करें, कॉर्पोरेट स्लेव कैसे करें, कॉर्पोरेट जेलसी कैसे करें, लेकिन दुनिया ऐसी हो रही है। if you just stay with or also look within, it's so easy कि जब ये uncomfortable से conversations हो तो हम बाहर देखना शुरू जाते हैं, मगर मेरा बॉस तो कभी इजाजत नहीं देगा, मगर पैसे तो चाहिए ना, सड़क पे आ जाएंगे क्या हम। but please also look at the state of the world right now, with the pandemic, with the recession, with the in natural disaster happening. Look at what we have done to ourselves. That is also a reality. तो ये जो जहाँ ये रियलिटी है कि हमें हाँ चाहिए, हमें इस रैट रेस जाना है, एंड बॉडी बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग, तो बॉडी नजर आती है, टेंजिबल है, तो वो पार्ट सबसे ज्यादा आगे आगे आता है, यू नो, इट्स लाइक दैट आउटस्पोकन चाइल्ड। तो उसको करना है, उसके लिए पीछे पड़ना है। उतना ही देयर आर स्मॉल पॉकेट्स ऑफ पीपल अराउंड हु आर सेइंग यार ऑर्गेनिक खाना खाते हैं या घर का खाते हैं, दाल चावल इज बेहतर क्योंकि मेरे जिस्म को सूट करता है, या जब मैं अच्छा सोच लेती हूँ ना तो मेरा दिन बेहतरीन होता है। दैट्स द बेस्ट थिंग आई कैन गेट, जस्ट द सिंपल स्लीप। देयर आर पीपल, but instead of looking outwards and constantly saying उसने क्या इसने क्या, इस तरह तो हम तो सही, so look inward, it's going to be very hard. But if you stay with it, favorite words of every therapist, if you stay with it, थोड़ी सी कोशिश करें, तो I think it will pass and you will flow and get into that state of flow. Umair, very quickly, जी। sorry about this because this is very exciting. No, go on. जो बॉडी पे हमने कोई बात नहीं की, राइट, बॉडी पे, राइट, सो आई थिंक द की वन कॉन्सेप्ट दैट आई हैव लर्न, आर वी शोइंग ग्रेटिट्यूड टू आवर बॉडी, हैव वी थैंक्ड आवर लिम्स? ओके, हम भागते फिरते हैं, दुनिया जहान का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हैव वी सेट बैक एंड सेड या थैंक यू माय हैंड्स, थैंक यू माय फीट, थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू माय किडनीज, एंड सो दैट यू नो, बिकॉज उसके बगैर तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। तो कभी ये किया हमने, कभी ये कहा कि यार अपनी बॉडी का शुक्रिया अदा करें, इट्स अ गिफ्ट एंड आई थैंक यू दैट यू हेल्प मी अचीव ऑल दिस। ये भी हम मिसिंग है, टू बी ऑनेस्ट, वी डोंट डू दिस, राइट। हालांकि बताया भी था कि एक एक हिस्सा गवाही देगा। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, यू आर राइट, मैं एक एक हिस्सा गवाही देगा, राइट। Yeah. Very good. Thank Wow, you. this has been very enlightening. Thank you very much, each one of you. We have a lot of questions, and I think a big question that I'd like to start with is just sort of the energy that I hear and that क्या you हमारी experience. ब्रॉडकास्ट में थोड़ा सा ब्रेकअप है या मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस हो रहा है? I'm seeing a very smooth Yeah, transmission. same here. Same Sometimes it goes off, but when I put somebody on full screen, but that's just, I think, otherwise it's smooth, Maddi. I think it's your connectivity. क्या सवाल है? it is. अच्छा, सवाल ये है कि जब ये आइडियाज आप और नॉट जस्ट दोज हु आर इन द प्रोफेशनल सर्किट, आप बिजनेस तबके में आ जाएं, खानदानों के अंदर जब आप ऐसी गुफ्तगू करते हैं, इस तरह के ख्याल देते हैं, तो हम बहुत आइडियल साउंड करते हैं। देखें जी, आपकी बातें आइडियल हैं और फिर एक रियल वर्ल्ड की बात सामने आ जाती है, और वो रियल वर्ल्ड के कुछ जो सवालात हैं, I'd like to sort of share those. So for example, one is that what do you do in an environment जहाँ पे concept of service ये नहीं है, जहाँ पे लीडर्स चाहते हैं कि सारे लोग उनकी खिदमत में लगे हुए हो, और जो नहीं लगे हुए वो पनिश हो रहे हैं, रेप्रिमांड हो रहे हैं, आप ऐसे इदारे का हिस्सा हैं। मैक्स, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी तो फंसी हुई है ना इस चक्कर में, मैं क्या करूँ? What do I do? Should I respond to that? Yeah, please. Okay, fine. एक तो बात ये है कि ये सोचना कि दूसरे लीडर हैं, मैं लीडर नहीं हूँ, एक बहुत बड़ी नाशुक्री है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडर इज एन एटीट्यूड. लीडर इज नॉट अ टाइटल और अ पोजीशन और नंबर ऑफ ग्रे हेयर इन योर हेड. लीडरशिप इज एन एटीट्यूड, एंड लीडरशिप मीन्स डूइंग थिंग्स
which will take people toward their goals. That you are serving humanity, that you're serving people who are around you. Leadership is, I ask people, and let me ask these people. Think of 5 most important people in your mind that you think are very important for you. Now ask yourself, do they also know that you think that they are the most important people in your life? And they treat it that way? Or are they on the wrong side of our stick and our emotions? So everybody is a leader. If my bicycle, I'm riding a bicycle and I'm a daily wager, I'm riding a bicycle and my bicycle chain utar jati hai uspe se, do I park the bicycle in the middle of the road and fix the bicycle and not worry about whoever is driving around me? Or I move the bicycle to the side of the road so that I'm mindful that this road is being used by other people also. That's leadership. So irrespective of what type of leadership we might be suffering, we must see to it that because of that suffering that I'm going through, I ensure that my leadership is displayed. I think if I add to that, if I can build on it, Sure. issue is, yes, Max is absolutely right. Everyone is a leader, right? So as a leader, if we think that if we can work within our own sphere of influence, okay, and believe me, if we can we can do so much, okay, right? हम ये लोग कहते हैं यार हालात ठीक हो जाएंगे तो करेंगे, अभी ये हालात ख़राब हैं क्या करें, और हमें कोई काम नहीं करने देता, we complain and we the point is, the way I have seen, मेरे दायरा इख्तियार में क्या है, और जब मैं डिसाइड करता हूँ तो आई रियलाइज इतना कुछ है मेरे दायरा इख्तियार में, राइट, कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है. तो अगर मैं इसको डिफाइन कर लूँ कि मेरे दायरा इख्तियार में क्या है, तो देन आई डोंट नीड टू, व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई बात करता हूँ कि हम टाइम पे क्यों नहीं आते हैं, हम लाइन पे क्यों नहीं खड़े होते हैं, सिग्नल पे क्यों नहीं रोकते हैं, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं, तो कोई नहीं रोकता आपको करने के लिए, इसके बहाने हैं, सब बहाने हैं, राइट. ये अगर हम यही ओन कर लें, दीज आर बेसिक डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ, दुनिया बदल जाएगी. टू बी ऑनेस्ट विद यू, हम इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा करेगा, वो क्यों करेगा भाई, तुम करो ना अपने अंदर करने के लिए. सो टू मी दैट टू बिल्ड ऑन व्हाट मैक्स हैड सेड. Wow. Very quickly from Maddi, here is a question. What if we have a strong thinking and still things are not going the way we want them to? They will never go the way you want them. That is correct. That's Next question. That's the short answer. Let's be honest. It's a reality. They will never ever. इत्तेफाक हो गया कोई बिल्कुल exact, perfect, pristine, everything the way you want हो जाता है. But देखें, recognize ये जो balance की हम बात कर रहे हैं ना, recognizing how beautifully all the systems inside you and outside of you are already working. That's the balance that you already have in life. Your circulatory system, your digestion system, these are all systems. ये थोड़े से भी out of balance हो तो हमारा अगर पेट खराब हो तो हम अपनी एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते. So इसको मैं कनेक्ट करूंगा having acceptance, और आपकी जो बात की ये जो emotions हमारे गिरते हैं कि यार चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही, either it's associated with guilt or anger or something like that. तो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा वही कुलिये वाली बात है, उरूज ने भी कही, मैं सिर्फ अपने लफ्जों में कहना चाहूंगा कि ये वो मेहमान है जो unwanted मेहमान है. What you're feeling right now is a guest. Recognize it's a guest. He's on your doorstep and he's going mad. Bum 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 bum, dum 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 dum, dum dum dum. अब आपके पास चॉइस है, ये इसने जाना नहीं है, इसने एक दिन पूरा खड़ा रहना है, इसने पूरा हफ्ता खड़ा रहना है, इसने महीने, आखिर में ये थक हार के क्या करेगा, दरवाजे के साइड पे टेक लगा के खड़ा हो जाएगा नहीं, ये वो मेहमान है. आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, या तो you let him in, he'll come in, have a conversation which is probably going to be difficult, but you offer him tea, you sit him down, you have that difficult conversation, and then they will go. That's what guests do. आप बैठे उसके साथ चाय पिए, उसने रहने नहीं आना, वो रेजिडेंट नहीं है, मगर वो एक ऐसा परसिस्टेंट मेहमान है, वो एक ऐसा इमोशन है जिसको आप अपनी पूरी तरह उसको फेस नहीं कर पा रहे. तो वो दस्तक दिए जा रहा है, let him in, have the tea, then let him go. ये आप कम दर्द होगा, वो ज्यादा दर्द है कि आपके मेहमान खड़े होते जाएं दरवाजे के बाहर और आखिर में जिस तरह मकरूज आदमी के घर पे कोई कतार लगा के खड़ा होता है उस तरह कतार बना.
और let आप him खिड़की से in. कूद के कहीं और चले Maddi, जाए. The escapes. Maddi, you're Sir. absolutely right, because this is what Rumi said. Okay, exactly, Rumi ने भी यही कहा है. उसको Wow. अंदर आने दो, रोको मत. क्या मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या नई चीज लेके आएगा. Yeah. So to 100%, me, 100%. absolutely right. This is the way to go. I think Urooj said the same thing in a different way. So that तो great आएगा, वो conversation. बातचीत होगी, वो मुश्किल बातचीत होगी, मगर कुछ आपका पर्सपेक्टिव चेंज करके, कुछ नजरिया आप चेंज लोगों ने करके डायमेंशंस को जो बंदे बना दिया है ना, मेहमान आ रहे हैं और बोर्ड चल रहा नहीं, है, नहीं, ये this is- बड़ा पावरफुल सेशन बन गया है और इसकी बेसिस पे आपके भाई एक सेशन तैयार करेंगे इंशाल्लाह. Umair, Thank you very much for adding to the knowledge bank of Torque. This is wonderful and This we is love excellent. learning. By the way, Urooj, yeah, I'd like these last two questions here over time. So quickly, Heather has asked, is EQ related to holistic living? If so, how? Absolutely. Hafsa has Absolutely. asked, so just continue with the same. Are there countries, communities जिसमें ज़्यादा holistic living पे focus है? आप वैसे ही घूमती रहती हैं दुनिया भर में, क्या हम culturally कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं जो वैसे तो हम बड़ा होली समझते हैं अपने आप को, लेकिन holistic नहीं हो पा रहे हम? We talk about many other things generally, you hear it generally, but are we lacking in some way? So how would you respond to Hafsa's question? Any So insights from first those? EQ quickly. EQ का एक personal competence होता है, social competence. EQ starts with self awareness. हमने यहाँ बहुत ले दे के self awareness की बात की है. Then it comes self regulation, then others, and working in. So yes, definitely EQ अगर आप पढ़ेंगी तो बहुत ज़्यादा connected है. That's how it's connected. And दूसरी बात ये कि I honestly do not think कि हम generalize करके ये कह सकते हैं कि यहाँ टोरंटो में बहुत holistic living है और कराची में नहीं है. I think हर तबके में, हर जर्रे में आपको मिल जाएंगे लोग जो कि उस तरीके से रह रहे हैं. मेरी दोस्त लोग हैं जो इस्लामाबाद में हैं, कराची में, who are completely living that. And again, कोई परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अपनी जिम में किस तरह खाना डालना है, दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग रियली अट्यून्ड टू व्हाट माय बॉडी नीड्स. या मुझे अपने इमोशंस थेरेपी, एज अ थेरेपिस्ट टेल यू अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी सी थेरेपी इज ऑन द राइज. Psychotherapy, please get psychotherapy. It's absolute shameless plug in there. So I think that हर society में तो मिलेंगे, ढूंढो मिलेंगे, but अगर नहीं है तो you can be the first one Hafsa in that society. People will say Hafsa है ना, तो फिर हम Hafsa जैसे बनेंगे. All right, yeah, be the change. There's too भाई much अंदर का darkness. मौसम कैसा है? You might be the light. Umair, There's darkness you've got. जी, Umair, इरफान साहब. तुम्हारा एक नेक्स्ट सेशन करो, ओके? एंड मे बी यही पैनल होगा. सेक्शन इज आर वी ए सिक सोसाइटी? Are we a sick society? I find that question biased, you know. We have to reframe it. जवान लोगों के लिए सिक तो बड़ा अच्छा वर्ड होता है ना, सिक क्रूल होता है. Whichever way you look at, okay? कि हमारा Yeah. एक इंडिविजुअल कॉन्शियस क्या है और कलेक्टिव कॉन्शियस क्या है हमारा, राइट? Yeah. We can talk about that. You know, one thing that I'd like to add to this wonderful discourse that we have had, when you go inside, there is a story that you believe about your own self. Correct. And just like that, there is a story that the country believes about itself. Absolutely right. And I feel that Pakistan's story about its own self is disgusting. We are horrible in our own minds. Made in Pakistan is trash. So ये मुल्क जब कुछ अच्छा भी करता है ना, तो क्योंकि वो स्टोरी से अलाइन नहीं होता, तो हम उसको सैबोटाज कर देते हैं और उसको टॉप किसी और चीज से करते हैं, गंदा कर देते हैं, ताकि हम उसको वहीं पे ले आए जो हमारा जैसे इंसान अपने साथ करता है. And collectively we do that, maybe as a country, but yes, more to talk about. एक मैं अगर जुमला इस बात पे अगर आपकी इजाजत हो इरफान साहब कि जी, बोलो, क्योंकि बोलो. हमने अपने इंटरनल डायलॉग की जो बात कर रहे हैं, जब आप इंटरनल जाएंगे ना, जब आप ये अंदर की जर्नी में जाएंगे तो ये डायलॉग्स आएंगे ना, ये यू बिकम अवेयर ऑफ योर इंटरनल डायलॉग एंड यू स्टार्ट रियली टॉकिंग. इस पे मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक. हर वो चीज जो आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं है सही हो. इट्स अ डायलॉग. It can be right, it can be wrong. When we take frames of references and storylines and जैसे branding narratives हैं हमारे कि जी अमेरिका वाले ऐसे होते हैं, कनाडा वाले ऐसे होते हैं, सिंधी लोग ऐसे होते हैं, पंजाबी लोग ऐसे होते हैं, शिया लोग ऐसे होते हैं, सुन्नी लोग ऐसे होते हैं, वो perspectives और वो frames जो हमारा internal dialogue जो पता नहीं कहाँ से pick हुआ हुआ है. We never questioned why we have formed a perspective or a judgment on something. We just have it. उसको जब आप सवाल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जरा ओपन माइंडेड रहें कि मैं कुछ भी बिलीव करता हूँ किसी भी बारे में, खास तौर पे जनरलाइजेशंस का सवाल है, खास तौर पे जनरलाइजेशंस का क्यों करता हूँ.
उसकी जरा डीपर उसमें जाए कि ये मेरा अगर XYZ बिलीफ है कि ये इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, तो ये बिलीफ कहाँ से आ रहा है, ये मैं ऐसा क्यों बिलीव करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है, किसी का एक्सपीरियंस है, कितनी दफा हुआ, क्या डेटा सैंपल, इसकी जरा डिटेल में जाए, कि why do you believe what you believe, why do you think what you think, and is it right or not, should I be believing everything I think. ये अंदर की मुलाकात में ये वाले चीजें मराहिल जो है वो सामने आना शुरू होंगे मेरे ख्याल। और And अगर आप चीज जानो तो you're thinking, and you're not you're not thinking. what you think, you're not what you think, you are somebody who has thoughts, you are not what you think, आप अगर आप वही बात है कि मैं CEO नहीं हूँ, मैं एडवर्टाइजर, मैं अगर ये लेबल से मैं सीरियस हो जाता ना, जैसे हो जाते हैं लोग के सारी जिंदगी वो डॉक्टर बन के गुजारते हैं, वो मतलब आखिर वक्त तक डॉक्टर होते हैं, अगर मैं इस लेबल से सीरियस हो जाता तो कभी मैं म्यूजिशियन, शायर, क्रिएटिव डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, ये मैंने इतनी सारी जो चीजें की हैं जिंदगी में कभी नहीं कर पाता अगर मैं उससे अटैच हो जाता पर्सनली। मैं एक किताब सजेस्ट करूंगा फॉर एवरीवन, अगर पढ़ी नहीं है तो, एकार्ट टॉली की है अ न्यू अर्थ। पावर ऑफ नाउ। ओह, न्यू अर्थ। इट्स माइंड बॉगलिंग बाय द वे, सीरियसली अगर उसको आप पढ़ेंगे सब समझ आ जाएगा ये क्या हो रहा है, राइट? इट्स अबाउट आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग एंड ऑफ द डे। बस उसके बाद ये समझ नहीं आता इरफान साहब कि आप करें क्या सोशल मीडिया पे। ऐसी बात नहीं, फिर वो तुम्हारा मसला है उमैर, वो तुम्हारा मसला है। आई थिंक इट्स वेरी पावरफुल, बट जो उन्होंने जैसे ईगो को बिल्कुल स्मैश कर दिया ना हमारे सामने, ego versus presence, I think in today's times, and I think that's the message to close on, that it's a struggle, like Maddi said, it's a jihad, Irfan Saab said it's continuous, Max said it's processes, we have heard some great ideas, but this is ongoing. There is never a time wherein you have known completely the good, bad and the ugly. There will be times that at different ages, the different uglinesses come out. They've been stored from long, like Max said, in our compulsions, like Urooj said, maybe in our bodies as traumas. And what a wonderful adventure this can be if we see all as awareness of our own selves. See ourselves as awareness, rather than be weighing about the titles or a dimension of ourselves. It's been a privilege. If there's any last word, just quickly, just one liners, anybody, please say it. Maddi. अगर इजाजत हो तो ये जो हम क्लोज करना चाह रहे हैं, हमने बहुत ज्यादा जो टाइम हमने दिया है, which is the first stage of starting the journey of self awareness and holistic living, is getting to know yourself and then your thoughts and then your emotions. इसकी बात करिए। और मैक्स ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट किया था कि बर्थ, बी, बीच में सी है, सी इज योर चॉइसेस, योर chaos, your conversations, and D is death. मैं इसमें सिर्फ इसकी ABCD मुकम्मल करना चाहूंगा हमारे क्लोजिंग नोट पे, कि जो शुरू में A है ना, that is for Allah, call it God, call it your spirit, call it your higher energy or whatever. Between B and D, that's the second part when you connect with it. हम डायरेक्ट मेरे हिसाब से ना, हम जब तक अपने आप से कनेक्ट नहीं होते, अपने रब से भी कनेक्ट नहीं हो पाते। So once you do the start, जिस जर्नी का हम बात करें, then connect with your Rabb with honesty. When you know your own flaws, all your dimensions, all there is to you, then connect with God truly as well, right? So A, B, C, D. Allah, connect with your God. Be born as a new human being. Accept the chaos of C, and then die happily, because death is थक हार के आखिर हम घर जाएंगे, क्या ही खूब बात है कि हम मर जाएंगे। तो it is a reality, और हम जाने जैसे भी होंगे अल्लाह को प्यारे जरूर होंगे। एक इसमें अगर टाइम है तो मैं और कहना चाहूँगा, जो मेरे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, which I talk about, less is more, keep it simple, stupid, because there's so much clutter, and please don't overanalyze. Okay, that's one. Or please don't beat yourself up too much. ये अंदर जाना ज़रूरी है, अंदर झांकना ज़रूरी है, वो किसी मकसद के लिए है, इसलिए नहीं है कि अपने आप को अपने ऊपर इतना जुल्म करो, because mind doesn't differentiate, right? वो तो एनर्जी है, वो नहीं, तो अगर आप उसको नेगेटिव फीड करेंगे अपने बारे में तो आपका तो बुरा हाल हो जाएगा, right? So to me that's something we have to keep in mind. Thank you, wonderfully said, Irfan Saab. Urooj, Max, anything quickly? I just want to thank everybody who gave their energy and time today to listening to us. That's it. Thank you so much for listening. Max, sorry I cut you out. No problem. It's always a pleasure listening to everybody. I think एक तो थोड़ा सा अपने आप को हम आसान कर लें. It is all right कि हमारे इर्द लोग जो हैं वो अगर बक कर रहे हैं, please forgive my language, अगर वो बक कर रहे हैं
तो कोई बात नहीं, इजाजत दे दें लोगों को बक करने की। Correct, और लेकिन एहसास करें इस बात का कि इस बक को, ये मेरे बारे में नहीं हो रही, ये बेचारा कोई और एक ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसी जगह पे है जहां उसको इस वक्त कुछ और नहीं कर सकता, तारीफ नहीं कर सकता। प्लीज उसको डिस्कार्ड कर दें, लेकिन उसको अपनी स्किन के अंदर मत जाने दें और कोशिश करें कि यार मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि बक ना करूं, क्योंकि मुझे अवेयरनेस है इस बात की। एंड आई एनीबॉडी हु मेक्स एनीबॉडी फील बैड, इट्स माय काइंड ऑफ क्लिशे। आपको कोई भी शख्स किसी वक्त भी कोई ऐसी बात करता है जो उससे बुरा लगता है, तो प्लीज डोंट जज योरसेल्फ. It is possible that the person who is making you feel bad is in a bad place or is in a pain. Correct. So let go. Certainly don't discard it. See what is it that I can do differently so this person doesn't read me like this. If it's a perception. But if it's a reality, yes, let's work with ourselves and modify our behaviors and make them more mindful. Wow. Thank you very much. The person can be in the bad place. Don't curse yourself. Don't discard it entirely. The wisdom continues. Holistic living, challenge of our times, perhaps more. The screen is taking hours away. Our ambitions have become bigger, far bigger than our families at times. And we do end up regretting the choices we make. Here was an opportunity to learn from those who see lives differently from their lenses, go deep into the minds, and are transformational to others. इंतजार ना करें कि आप झटके लगें, झटकों में जाएं और फिर सोचें। आज से बेहतर आदतें बनाएं और अपनी डायमेंशंस को रिकॉग्नाइज करें। अपने अंदर के लोगों से मुलाकातें करें, उन मेहमानों को जवाब दें जो इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप ये डायलॉग नहीं करेंगे तो यकीन माने कोई और नहीं करेगा। लेकिन अक्सर लोग आपसे कट जाएंगे और वो आपको यही कह रहे होंगे कि आपने अपने आप को खुशगवार बनाना है, अपने आप को सेहतमंद बनाना है। To everybody, thank you very much from the bottom of my heart. One message and you're all on this screen and I feel so privileged. Torque is grateful for this dialogue late in the night. Urooj, Mazhar, from your workplace, you took this time out. It's very hard, but like you do it, so can others, okay? Max, thank you very much. You had a party and after that you joined us. Irfan Sahab, thank you. You are a very, very busy man. And Maddi, it was a privilege listening to you today after such a long time. And I must say that you should do it and you should do it far more than you do. On that note, thank you very much, Atir, Sarah Mashood, Ali Pervez, Team Torque, for helping us put this together, and all of you wonderful people who have participated. Let me take out a few names. Sana Shamim, Arsalan Larik, it was wonderful to see your comments. Naved Saab, what a privilege listening to you on the chat. Mohsin Ali Shaukat, Akila Jafri, and so many others. We thank you from the bottom of our heart, and I really, really hope that this has helped you and that you will put a few ideas into action right away. What you will do will become yours. Continue transforming. Thank you very much. ऐसे क्यों बेचैन फिरे जागेंगे जरूर ये भाग तेरे कोई जानना ये जोश तेरा कोई जानना जुनून तेरा घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना घूमता ना ताना ना 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 घूमता ना ताना ना